Good evening to all the students. I saw messages of few of the students and I thought to wish you all at the same point in time. So good evening. Today's session is on financial management and today's session we would be learning about investment decision. Okay? First of all, your financial management sessions are already started, right? I would request all the students to be responsive on the chat box so that it gets easy for me because आपका वीडियो भी ऑफ है ऑडियो भी ऑफ है. Yeah, good evening to all. Let me share my screen. Can you all see my screen? Now students, in financial management you have already learned that financial management involves taking three decisions. Yes or no? Uh, every financial manager has to take three decisions in his financial life. कौन से तीन डिसीजन होते हैं? This is the basics of financial management. Can I say every financial manager ideally has to take investment decision, financing decisions, and dividend decisions. Yeah, correct. And I guess you have already learned about what is financing decision. I would be covering your investment decision and dividend decisions. ठीक है? Investment decisions में we would be learning about the chapter called capital budgeting. We would be learning about the chapter called management of working capital. And under dividend decisions, we would learn the name of the chapter called dividend decision. So chapter का नाम ही है dividend decisions. ठीक है? So these three chapters I would be broadly covering with you all. सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है? टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल. Now let's start with investment decisions. Investment decision में what is our learning objective? First of all, any paper or any chapter you learn, you should understand what is the learning objective of that chapter. इस chapter से मुझे सीखने क्या मिलेगा? This is the first thing that you should always target in your life. ठीक है? So the learning objective of this chapter is very simple. See, can I say this is investment decisions? A decisions माने डिसीजन मेकिंग. यस और नो? हमें इस चैप्टर में कुछ डिसीजंस लेने होंगे. If we go by the name of the chapter, yes or no? So this chapter says that under investment decision, you all as a financial manager or you all as a CFO has to decide what you have to decide, whether to invest in the project or not, whether to invest in the project or not. हम यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? ये हमारे स्कूल कॉलेज वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे. Everyone, is my voice clear to you all?
Clear, right? Yes. So maybe Pranav, it would be from your end, something from your end. Okay. So in this chapter, our learning objective, or I would say we have to make a decision about what, whether to invest in the project or not. ये हम यहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? Can I say here the project has a very broad meaning. The term project has a very broad meaning. It may include starting a new business or a new venture. Project may also mean expansion of your existing production capacity. Project here may also mean launching a new product. Project here may also mean buying a new machine. Project here may also mean replacing the old machine with new one. So ये सारे प्रोजेक्ट कहलाते हैं. द टर्म प्रोजेक्ट हैज अ वेरी ब्रॉड मीनिंग. मतलब कि इस चैप्टर में हमें ये डिसीजन लेना है क्या वेदर वी शुड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और वी शुड नॉट. आर यू फॉलोइंग? क्या हमें हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? हमारा फायदा किसमें है? आर यू फॉलोइंग? क्या हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Whether we should buy a new machine or whether we should continue with the existing machine. Hey, are you following, students? Are you understanding the learning objective of this chapter? हमें डिसीजन लेना है. क्या डिसीजन लेना है? क्या हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें? And what is the meaning of project? It has a very broad terminology. ठीक है? So now how to decide whether to invest in the project or not? Let's understand with the help of very simple example. ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं. Let's say we are planning to start a new manufacturing business. ठीक है? Planning to start a new manufacturing business. Manufacturing of kids wear. क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा वही चलता है. And for the sake of simplicity, just for the sake of this example, let's say I'm planning to run this business for 4 years. So life of my project. Can I say my project is now named as starting a new manufacturing business? Okay? And for the sake of simplicity, for this example, let's say life of the project is 4 years. बाकी तो मैं लाइफ लॉन्ग चलाऊंगा प्रैक्टिकली. ठीक है? कह रहे थे टू स्टार्ट एनी न्यू बिजनेस व्हाट इज द प्राइमरी थिंग दैट वी वुड नीड? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी, पैसा, कैपिटल. यस और नो? सो लेट्स से इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज ₹10 lakhs. ठीक है? अच्छा, टेल मी फ्रेंड्स, अब मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो पैसा लगता है, जो कैपिटल लगता है, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया. फैक्ट्री लगा दी, मशीन्स लगा दिए, रॉ मटेरियल्स डाल दिया. आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन एंड आई स्टार्टेड माय बिजनेस. कैन आई से नाउ वंस दिस इन्वेस्टमेंट इज डन एवरी ईयर आई विल जनरेट सम कैश फ्लोस? यस और नो? ये मैं बिजनेस कमाने के लिए कर रहा हूं. I'm doing this business, I'm running this business to earn cash flows. So let's say cash flows in year 1, 2, 3 and 4. In year 1, थोड़ा business down था, so 2 lakhs. In year 2 and 3, it was at a growing stage. So I earned some good cash inflows. And in year 4, again, maturity stage and end of the business life cycle. ठीक है? Now tell me friends, आपको क्या लग रहा है विद दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू टू स्टार्ट अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? माय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख, मतलब मैं पैसे लगाऊंगा 10 लाख एंड आई एम अर्निंग 2 + 3 5 + 7 12 + 6 18 lakhs. बोलो, शुड आई स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और नॉट? ये दिस इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, राइट? तो बताओ, व्हाट इज योर ओपिनियन? Whether should I start this manufacturing business or not? Yes or no?
The Diya says yes, Pooja says no. A cash inflows means it is net of cost, net of cost. दिस इज द फाइनल प्रॉफिट, फाइनल कैश इनफ्लोस, मतलब सेल से जो पैसा आया फिर सब कॉस्ट बेयर किए उस सेल्स में से, एंड द नेट प्रॉफिट आई वुड से नेट कैश अवेलेबल विद मी, दैट इज कैश इनफ्लोस. Navneet say yes, Shamli yes, so most of you are saying yes. So what is your reason behind saying yes? Can I say your reason is very simple? Sir, हमने कैश इनफ्लोस, सर जस्ट कंपेयर द कैश इनफ्लोज विद आउटफ्लोज ना, एंड सी वेदर यू आर अर्निंग और नॉट. ठीक है, दिस इज योर रीजन. सो सर आपने 10 लाख लगाया है और आप कमा रहे हो 18 लाख, सर 8 लाख का फायदा हो रहा है, नेट कैश फ्लो इज 8 लाख. सर यू शुड एक्सेप्ट, यू शुड स्टार्ट द बिजनेस. ए अगर ये इतना सिंपल होता, कैन आई से दिस मैथमेटिक्स कैन बी डन बाय अ 7th स्टैंडर्ड किड एज वेल, अ स्कूल गोइंग किड एज वेल. सो आपका ये इतना सिंपल होता तो क्या ये सीए इंटर लेवल पे रखते? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट इज नॉट दिस सिंपल. सो कैन यू से what was your reason of saying yes? You compared, you simply compared what? You compared cash outflow with cash inflow, correct? But your comparison that you did was in absolute terms. Means you just compared the absolute amount of cash outflow with absolute amount of cash inflow. And you said, sir, we should accept the project. But what investment decision says, okay, you are correct. You need to compare cash outflow with inflow. That is right. But you need to compare present value of cash outflow with present value of cash inflow. Students, are you following? Your comparison, just a mere comparison of outflow and inflow, is called absolute comparison. Is called comparison in absolute terms. But investment decision says, no, you cannot decide by comparing it in absolute terms. You can decide only when you compare in real terms. Are you following, students? So investment decision chapter says you need to make a comparison. Yes, you are correct. आपको compare करना है outflow with inflow. Sorry, this is inflow. Huh? You need to compare outflow with inflow, but not in absolute terms, in real terms. Are you following? And then see whether your present value of cash inflow is greater than outflow or not. And then decide whether to invest in the project or not. Following, students, can I say your comparison is little illogical? Why? The reason is, ये initial investment है, वो तो आज के तारीख में होगा. This you have to invest today. But this stream of inflows you will generate in year 1, in year 2, in year 3, in year 4, and so on. So can I say, ये आज के तारीख में होने वाला है. But this 2 lakh you would be earning after year 1. This 3 lakh at the end of year 2. 7 lakh at the end of year 3 and 6 lakh at the end of year 4. So can I say, एक साल बाद जो 2 लाख मिलने वाला है ना आपको इन द फॉर्म ऑफ कैश इनफ्लो, कैन आई से उसकी वैल्यू आज तो कम होगी. It would be something, I guess, around 1.9 lakh or 1.8 lakh, something, some random figure, but it would obviously be less than 2 lakhs. Yes or no? 2 साल बाद आपको जो 3 लाख मिलने वाला है, कहने से आज की वैल्यू तो उसकी काफी कम होगी. Oh, this 6 lakh you would be receiving at the end of year 4, but it would be so less today. Are you getting this? So you need to bring down the future cash flows
in present value terms. Students, are you getting this concept? So your comparison was a mere absolute comparison of outflow and inflow, which was partially incorrect. In order to decide whether to invest in the project or not, do comparison of outflow and inflow in real terms. And what do you mean by real terms? ए real terms माने present value of outflow को present value of inflow से compare करिए. ठीक है? So now next question arises, sir, how to calculate present value? How to calculate future value? Can I say ये आपने at foundation level already सीखा है by using the concept of time value of money. Yes or no? This you have, I guess this you would have studied at quantitative aptitude, mathematics, time value of money. What was time value of money? Can I say future value is nothing but present value 1 plus r raised to n? Correct. With Prakash, correct. Yes or no? So can I say this stream of cash inflows that I have over here, can I say these are future values for me? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद. So to bring the future value to present value, can I say ये 1 plus r raised to n left side आ जाएगा? Future value upon 1 plus r raised to n will be my present value. Yes or no? This is how you calculate present value. So this technically is termed as discounting of future values. क्या बोलते हैं इसको टेक्निकली एफएम में? डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यूज. ए मींस आप फ्यूचर वैल्यू को कम कर रहे हो ना बाय डिस्काउंटिंग इट. आर यू गेटिंग दिस? यू आर ब्रिंगिंग डाउन द वैल्यू ऑफ फ्यूचर वैल्यूज. सो दैट इज कॉल्ड एज discounting of future values. Yes, discounting of future values. Correct. So can I say in this case, for example, let's say for the time being my R is 10%. So what would be my present value of future cash inflows? तो can I say मैं यहाँ पे year लिखूंगा 1, 2, 3, 4. Yes or no? These are my cash inflows. Or I can term it as future values. Can I say it is 2 lakh, 3 lakh, 7 lakh and 6 lakh? Yes or no? Can I say to bring this future value into present value? मेरी फॉर्मूला थी फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 plus r raised to n. Yes or no? Are you getting this? So can I say in year 1 it would be 2 lakh upon 1.1 raised to 1. N is the number of years. N is years. In year 2 it would be 3 lakh upon 1.1 raised to 2. In year 3, present value of my year 3 cash inflows would be, can I say 7 lakh upon 1.1 raised to 3. And for year 4 it would be 6 lakh upon 1.1 raised to 4. Bolo, any doubts? Is this clear to you all students? How to calculate present value ये समझ रहा है everyone? Clear? Yes. Thank you. Clear? Now do you know how to solve this in calculator? कैलसी पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डू यू नो दिस? सो टेक 2 lakh इन कैलसी, डिवाइड बाय 1.1 एंड प्रेस इक्वल टू 1 टाइम. जिसको पता है वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता है आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सो टेक, सी यू नीड टू फर्स्ट सी टेक गो वन बाय वन. Go one by one. First take for year 1. So can I say you want to calculate present value of year 1 cash inflows? So take 2 lakh on calci, divide by 1.1 and press equal to 1 times. एक बार press equal to करिए. कितना आ रहा है आंसर? Take 2 lakh on calci, divide by 1.1 and press equal to
इक्वल टू साइन जो होती है ना उसको एक बार दबाइए। 1811818, ठीक है, सबका ये आया 1811818। तो कहना इसे एक साल बाद, व्हाट डज दिस 1811818 मीन? कहना इसे एक साल बाद जो 2 लाख मिलने वाला है, टुडे इट इज वर्थ 181,818। आर यू फॉलोइंग? द कैश इनफ्लोस that I'm expecting after year one of 2 lakhs. Today it is just worth 181,818. Are you following? This is how you interpret. Correct? अब ईयर 2 का करना है हमें डिस्काउंटिंग, तो टेक 3 लाख ऑन कैलसी, take 3 lakh on Kelsey, divide by 1.1 and now press equal to 2 times. 2 बार equal to दबाना। सर 2 बार क्यों इसमें? जितने साल होते हैं ना, सी दिस इज ऑफ ईयर 2, सो 2 बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा, ठीक है? आर यू फॉलोइंग? दिस इज अ ट्रिक इन द कैलसी। यस, इफ आई इन्वेस्ट इन फ्यूचर, so if I in future nahi, if I invest 1.81 lakh today for 1 years at 10%, then you will receive 2 lakh at the end of year 1. This is what it means दिया। आज आप 1.81 lakh इन्वेस्ट करो 10% पे, and at the end of year 1 you will receive 2 lakh. This is what it means. ए year 2 का आया 247,934 everyone. Did you understand how to solve it on Kelsey? 3 लाख डिवाइड बाय 1.1 प्रेस इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है? ये अब 7 लाख को डिस्काउंट करना है, तो कहना है इसे 7 लाख डिवाइड बाय 1.1, नाउ आई विल प्रेस इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है? क्योंकि रेस टू 3 है तो 3 बार इक्वल टू दबाएंगे। ईयर 3 525,920, 525,920, and year 4 6 lakh divide by 1.1 press equal to 4 times. Okay, so it is somewhat rounding off error, that is final, Linga. 409,808, 409,808. So every student, did you get it how to solve it on Kelsey? बोलो, इसमें कोई डाउट है? कैलकुलेटर पे ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? Clear? Yes. So can I say this is now my total present value of cash inflows? Yes or no? ये सबका समेशन। अरे सो कैन यू सी, ये जो 4 साल बाद 6 लाख मिलने वाला है, द 6 लाख that you are expecting to receive at the end of year 4 is just worth 409,808 today. आज के तारीख में तो उसकी वैल्यू काफी कम है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। So tell me, what is the total of present value of cash inflow? टोटल सबको ऐड करो, 1365,480, 1365,480, and now you compare this inflow with your present value of outflow. Now my question to you, think logically. एक है ना ऐसे initial investment I have to incur today itself, yes or no? अगर वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं, आई वुड नॉट बी एबल टू स्टार्ट माई बिजनेस, yes or no? So that outflow, can I say I have to incur today itself? तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? Can I say आज का प्रेजेंट वैल्यू would be 10 lakh itself, yes or no? So present value of cash outflow, this we would not discount. Why? Because this investment, this capital investment I have to incur today itself. तो आज की क्या प्रेजेंट वैल्यू निकालू? Are you getting this? It would be same. So can I say my net present value? Net present value, which we term it as NPV. Net present value, which we term it as NPV. Can I say it is nothing but 1365,480 minus 10 lakh, and you are earning a net present value of rupees 365,480, somewhat indicating profit for you. So now you decide whether to accept the project or not.
So can I say I will accept the project now because it is generating more cash inflows, but in present value terms. Are you getting this? It is generating more cash inflows in than outflows, but in present value terms. See, आपका आंसर देखो क्या आ रहा था. आपका आंसर was 8 lakhs, but real profit is not 8 lakhs. Real in present value term, it is just 365 480. Are you getting this, everyone? So accept the project. Any doubt, students? So the point is, under investment decisions, you have to compare outflow and inflows. Okay? You have to decide whether to invest in the project or not. But for that comparison to happen between outflow and inflow, your comparison should be in real terms. Are you getting this? Real terms माने present value of inflow को compare करो present value of outflow से. Following everyone, and then see whether you are on a profit side or you are on a loss side, and then decide. Understood, everyone? Understood? This chapter is also called as capital budgeting chapter. इसका नाम हम normally in general parlance we say that this chapter is called capital budgeting. So this chapter says that there are 7 different techniques. This chapter says that there are 7 different techniques or methods. There are 7 different techniques or methods to decide whether to invest in project or not. मतलब कि आपको ये जो प्राइम जो अल्टीमेट डिसीजन लेना है ना कि क्या मैं बिजनेस स्टार्ट करूं कि नहीं, वो डिसीजन लेने के लिए, वो डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगा ये 7 डिफरेंट टेक्निक्स. आर यू फॉलोइंग? देयर आर 7 डिफरेंट मेथड्स दैट विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग whether to invest in the project or not. Are you following? And one of the technique I already explained you is NPV. This is one of the technique. But can I say this technique is very logical and practical? Are you getting this? मैंने जो example दिया, even you are able to link with that practicality and logicality. Yes or no? So this was one of the technique called NPV technique, and this technique is highly used technique in industry, highly asked in examination, highly practical, highly logical. Followed? But can I say we are in academics? We are in syllabus oriented currently. So हमें सातों टेक्निक पढ़नी पड़ेगी. Understood, everyone? So what? Let's just note down the names of these 7 technique. And ये 7 technique का काम क्या है? This 7 technique will help you in deciding कि हमें प्रोजेक्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. ठीक है? WhatsApp link? There is no such WhatsApp link. Number 1 is payback period. Number 2 is discounted payback period. Number 3 is accounting rate of return. Accounting rate of return और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. इसका दूसरा नाम है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है. नंबर 4 इज आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक. हाईली इंपॉर्टेंट, हाईली प्रैक्टिकल, हाईली यूज्ड, हाईली लॉजिकल. Number 5 is there is a small concept derived from NPV technique only,
called profitability index. सी ये सारी टेक्निक्स मैं आपको समझाऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट, डोंट वरी. राइट नाउ आई एम जस्ट नोटिंग देम डाउन. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसका दूसरा नाम है, कभी कभार इसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं. डिजायरेबिलिटी फैक्टर. नंबर 6 is internal rate of return. Internal rate of return, IRR. Number 7, last but not the least, modified IRR, modified internal rate of return. ठीक है. सो इस चैप्टर में the theme line is to study, to understand the concept of all these 7 different techniques. Are you getting this? Manish will provide. Okay. So yeah, tech team will provide the WhatsApp link. ठीक है. सो डिड यू अंडरस्टैंड द थीम? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आप एक मूवी समझो, मूवी. दिस इज अ मूवी एंड हमें इस मूवी के 7 एपिसोड देखने हैं. मूवी नहीं, सीरीज, वेब सीरीज. एंड उसकी हमें 7 डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़नी है. ठीक है. बट सीरीज चालू करने से पहले we need to understand some few terminologies, some few concepts. Are you following? ठीक है. So can we begin our web series? But before starting these 7 episodes, we need to create some background and we need to understand few terminologies and concepts. ठीक है. So let's understand that. Can I say under NPV technique, can I say ये rate, for now I gave you a random rate 10%? Yes or no? अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला, assume R is equal to 10%. But actually how this R is decided, that we need to learn first. Hey, are you following? Because this is the base. ये R 10% आया कैसे? So R is nothing but your desired rate of return. Can I say R is nothing but my discounting rate? Yes or no? Rate at which I will discount my future cash flows. So R is called as discounting rate. Now, how R is derived practically? So it is nothing but your desired rate of return from the project. Desired rate of return from the project. Or your expected rate of return from the project. Are you following, students? It means, can I say my project is starting a new manufacturing business? Yes or no? And I wish my desired return from this project is, let's say, 18%. So my R will be 18%, my discounting rate would be 18%. Followed, everyone? This is how practically R is decided. Are you getting this? Clear? But can I say, मुझे 18% चाहिए? Can I say कुछ greedy इंसान हो गए? He will say, no, I would to want more. I would to want 25%. So can I say for him, for that greedy person, R would be 25%? Yes or no? Discounting rate would be 25%. Some person is like a saint, very contented and satisfied. He or she says, no, we are happy if we get 7 to 8% as well. So can I say for them R would be 7 to 8%? Because their desired rate from project is 7 to 8%. Are you following? But can I say we are in academics? Every student will have different desires. So we cannot, we have to bring it to uniformity, right? Because we are in academics. हमें एक standard rate पे लाना पड़ेगा. So next step, if this is not found, then check the industry rate. Check for the industry rate. मतलब कि in my present example, can I say I started a manufacturing business of kids wear? तो kids wear business में, kids wear manufacturing business में, what is the ideal industry rate? See that and use that.
Understood, everyone? Second option is check for the industry rate. Manish has shared the WhatsApp link. Understood? So R is either your desired rate of return, but in academics we need to bring it to uniformity क्योंकि सबका डिजायर अलग अलग होगा. Yes or no? And question में तो एक रेट देना पड़ेगा. So we need to bring it to uniformity. So in that case, check for the industry rate in which your business operates. ठीक है? अच्छा, वो भी अवेलेबल नहीं है. Then as an ideal layman, as a rational businessman, can I say you would want कि एटलीस्ट मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो रिकवर हो. आर यू गेटिंग दिस? सो इन दैट केस वी यूज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज. Yes or no? WACC. Have you heard this term? Weighted average cost of capital. Have you heard this term before? Yes, yes. So can I say business में मैंने जो पैसे लगाए होंगे, the amount that you invested in the business, can I say कहीं से मैंने वो कैपिटल रेज किया होगा, and that capital that I have raised would bear some cost. So at least recover that from the project. At least ask for that rate from the project. Are you following this? So can I say here R is your first go for your desired rate. Then check for the industry rate. If industry rate is not available, then rationally businessmen would want their cost to be recovered. So at least ask for that rate. Understood? So in our majority, 99% of the question, your discounting rate would be WACC. Following everyone? Because we are in academics, we want some uniform rate. Okay? So our discounting rate in most of the question, almost all questions would be WACC. But did you get the logic कि discounting rate होता क्या है? R जो मैंने 10% straight away बता दिया, how it is actually calculated or found? Everyone? And how to calculate WACC you have learned in cost of capital chapter. ठीक है? So this was about R. Understood? क्योंकि हमें R चाहिए, ये डिस्काउंट करने के लिए एक रेट चाहिए. How to find that? So this is the explanation of R. Second explanation. ये जो मैंने कैश इनफ्लोस दिए थे ना, the cash inflows of every year that I gave to you. Year 1 का was I guess 2 lakh. Year 2 का 3 lakh था. Year 3 का 7 lakh and year 4 का 6 lakh. How this 2 lakh came? How is this calculated? This also we need to learn in this chapter. क्योंकि see, practically in this chapter, sometimes question will give you directly the cash inflows. But in some of the questions, or in I would say in majority of the questions, they would not give this figure directly. They would give some scattered data. They would give some facts and figures. And from that scattered data, you have to come to this point. Are you following? So our step 1 was learning to decide the R, the discounting rate. Step 2 is learning how to calculate the cash inflows. मान लो एक क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया है कैश इनफ्लोस, योर जॉब इज डन. इट इज वेरी सिंपल. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द डिस्काउंटिंग रेट एंड ब्रिंग इट टू प्रेजेंट वैल्यू. बट व्हाट इफ कैश इनफ्लोस फिगर्स आर नॉट गिवन? देन हाउ टू कैलकुलेट? दैट वी आर लर्निंग. ठीक है? तो फॉर्मेट इज वेरी सिंपल. This I guess you have already learned, or you would get that feel कि यार ये तो हमें फॉर्मेट पता है. फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोस. ठीक है? कैश फ्लोस इज मोर और लेस लिंक्ड टू रेवेन्यू स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट? सो इट इज मोर और लेस वेरी सिमिलर टू योर इनकम स्टेटमेंट. सो हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से. फ्रॉम सेल्स we subtract variable cost, we get contribution. I hope you all know this. इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे,
फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे बट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन है तो उसको अभी फिलहाल हटा दो, डोंट सब्ट्रैक्ट दैट, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट फिगर इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। द रिजल्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? NPBDT, मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। इट मीन्स ये अमाउंट में से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है और टैक्स भी माइनस नहीं हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दिस वी विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, तो आई विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, सो आई विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट और NPAT, ठीक है। इसमें से हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे एंड आई विल गेट माय कैश इनफ्लोस। सर डेप्रिसिएशन को ऐड ही करना था तो पहले माइनस क्यों किया? माय क्वेश्चन टू यू, टेल मी, मैंने ऐसा क्यों किया? पहले माइनस किया एंड फिर उसको ऐड कर दिया। आई एम नलीफाइंग इट्स इफेक्ट, सो व्हाई डिड आई डू दैट? इससे अच्छा लेते ही नहीं ना सर आप डेप्रिसिएशन। डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? फॉर टैक्स पर्पस मुस्तफा राइट, प्रणव राइट, नवनीत राइट, ओ या एवरीथिंग, एवरीवन आर राइट फॉर टैक्स इफेक्ट, फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स। A cost of capital right now, I cannot solve the doubt on cost of capital chapter because currently the session is on investment decision. So I have to follow that. During revisionary lectures, after this live lectures, after a couple of months, there would be revisionary lectures. At that time, you can ask this doubt. Okay? Okay. See, financial management is little different from accounting. Huh? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो अकाउंटिंग इज मोर कंसर्न विथ प्रॉफिट्स, बट FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस इज मनी, FM इज मोर कंसर्न विथ कैश फ्लोस. So can I say depreciation is a non-cash expense? Yes or no? So ideally depreciation का cash inflow में कोई स्थान नहीं होना चाहिए because depreciation amount is not I'm incurring from my pocket. Are you getting this? तो FM में आइडियली डेप्रिसिएशन का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बट कैन आई से डेप्रिसिएशन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन मुझे कुछ टैक्स सेविंग्स करके देगा. सो दैट्स व्हाई in order to calculate the real tax, the true tax amount, I first depreciation subtracted, मैंने पहले माइनस किया, फिर एक बार मुझे टैक्स सही से पता चल गया, कैन आई से माई वर्क जॉब ऑफ डेप्रिसिएशन इज डन, सो उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया. आई थ्रू हिम आउट ऑफ माई स्टेटमेंट कि भाई तेरा काम सिर्फ टैक्स बचाने तक का था, मैंने एक बार मेरा टैक्स सही कैलकुलेट कर दिया, योर जॉब इज डन, नाउ यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई स्टेटमेंट. आर यू फॉलोइंग? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कैश इनफ्लोस. सो ये जो 2 लाख आया है ना, ये कुछ ये फॉर्मेट फॉलो करके 2 लाख इज कम. आर यू फॉलोइंग स्टूडेंट्स? वेद प्रकाश का गुड गुड क्वेश्चन. I was expecting this question. See, वेद प्रकाश asked कि सर हम जो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट हमने देखा था रेशियोज में, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में, मे बी इवन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वी यूज टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट ना, यहाँ पे NPBT EBIT होता था, फिर वी यूज टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट, फिर वी यूज टू सब्ट्रैक्ट टैक्स, यूज टू गेट EAT, फिर वी यूज टू सब्ट्रैक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड. तो सर आपने तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया, यू हैवंट सब्ट्रैक्टेड प्रेफरेंस डिविडेंड एज वेल.
तो ए प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑल्सो एन आउटफ्लो, यस और नो? सो यहाँ पे वो कम होना चाहिए इनफ्लो. आर यू गेटिंग दिस? Interest is also an outflow, so this should be some amount less. ये थोड़ी कम अमाउंट होनी चाहिए थी. तो सर आपने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया? द सिंपल लॉजिक, कैन आई से ऑल दिस कैन फ्लो कैश फ्लोज यू आर डिस्काउंटिंग एट WACC, yes or no? All these cash flows you would be discounting at cost of capital. Can I say cost of capital कैसे कैलकुलेट होता है? Weight of debt into cost of debt. So can I say यहाँ पे तो कॉस्ट आ ही गया है WACC में, yes or no? The discounting rate that we will use, can I say it is WACC? And WACC कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? Weight of debt into cost of debt plus weight of preference into cost of preference plus weight of equity into cost of equity, yes or no? तो ये सारे cost is already included in WACC. So if we again subtract interest over here, it is double counting of interest. You are including interest dual times. Are you getting this? So that's why in the format of capital budgeting, हम capital budgeting में जो income statement बनाते हैं उसमें we don't subtract the financing cost. Are you following? Financing cost means interest minus नहीं करते, preference dividend भी minus नहीं करते, equity dividend भी minus नहीं करते. Following? Financing cost means cost incurred to raise the finance. ठीक है? Followed everyone? Ved Prakash, clear now? Okay, thank you. Understood? So this format is little different from the format that you have learned. The only difference is you don't subtract interest, preference dividend and equity dividend. ठीक है? So understood how to calculate cash inflows and how to find the discounting rate? Everyone? बोलो, any queries, any concerns? Because this is the base. This you should know. अब हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आगे करेंगे, आई विल नॉट टीच यू अगेन हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोस. फॉलोइंग? सो मूविंग अहेड इन लाइफ, देयर आर नेक्स्ट टॉपिक under this chapter is called as relevant cost. Relevant costs. Initially some of the students had doubt कि सर हमने कॉस्ट तो लिए ही नहीं कैश इनफ्लोज में. कहना है से सारे आ गए, अब वेरिएबल फिक्स्ड सब आ गया इसमें ही. So this cash inflows is net of all the cost. Correct? Understood? So now there is a concept called relevant cost. Relevant cost means कौन से कॉस्ट हमें यहाँ इंक्लूड करने हैं एंड कौन से कॉस्ट इंक्लूड नहीं करने हैं इस स्टेटमेंट में. आर यू फॉलोइंग? वी आर लर्निंग दैट नाउ. Which cost are relevant for our decision making and which cost is totally irrelevant for our decision making. ठीक है? Number one, already discussed depreciation. Can I say depreciation in itself is irrelevant, but tax savings on depreciation is relevant. Are you following? Depreciation as a whole does not hold any importance in this statement because it is a non-cash expense और हमें cash flow चाहिए. Are you following? So depreciation is a non-cash expense. Ideally in itself is irrelevant. Means हमें irrelevant means हमें depreciation को कोई स्थान कोई जगह नहीं देनी है इस चैप्टर में. But can I say tax savings on depreciation is relevant for us? Why? Because depreciation expense है तो मेरा जो ज्यादा टैक्स जाता वो अब नहीं जाएगा. Are you following? Tax savings on depreciation is relevant. Everyone, are you understanding this? Is this point clear to you all? इसमें कोई डाउट है? आगे बढ़ू. सो फर्स्ट वॉज डेप्रिसिएशन. सो नॉट जस्ट डेप्रिसिएशन, एनी नॉन कैश एक्सपेंस, अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन के साथ. इफ इट इज इंटेंजिबल असेट देन वी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन. तो उसकी भी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, बट टैक्स सेविंग्स ऑन अमोर्टाइजेशन की जगह है. फॉलोड?
Next is sunk cost. Hey, have you heard this term before, sunk cost? क्या आपने ये वर्ड सुना है अपनी लाइफ में कभी पहले, sunk cost? All non-recoverable cost once incurred. Yes, correct. Kuldeep is correct. Means sunk means what? डूब गया. So all cost जो already हमारा डूब चुका है. Can I say it would be irrelevant for us over here? Cost which is now non-recoverable. It is already incurred and उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. So it is irrelevant. Just to give you some practical example of this, sunk cost means ए ये जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, दिस डिसीजन मेकिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और नॉट, पहले ये डिसीजन मेकिंग पेपर वर्क पे होता है. एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट बनता है. फर्स्ट ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोटेड डाउन इन पेपर and one feasibility study or project report is prepared. Have you heard of this term project report before? Can I say, and this project report is generally done by some professionals like CA, CS, CFA. ऐसे प्रोफेशनल्स बनाते हैं ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट. So if you want to start a business, you are not a finance guy, you will come to CA. He will say कि यार देखो मेरे माइंड में एक मस्त बिजनेस करने की आइडिया आई है, आई वांट टू स्टार्ट अप समथिंग न्यू. दिस ऑल आर द मॉनेटरी वैल्यूज, दिस ऑल आर द अमाउंट्स. नाउ प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड टेल मी क्या मुझे ये प्रोजेक्ट में या ये स्टार्टअप में जाना चाहिए कि नहीं. तो कैन आई से दैट प्रोफेशनल विल प्रिपेयर द एंटायर प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एंटायर फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट? यस और नो? फॉर द बिजनेसमैन, क्या he will do the work free of cost? Tell me, as a CA or as a CS or as a CFA professional, क्या आप फ्री में काम करोगे? No, you will charge some professional fees. Yes or no? So can I say that businessman has to pay some professional fees to the professional? Yeah, are you getting this? Now tell me, now my question to you. If the businessman takes up the project, can I say he has to pay the fees? Yes or no? To the CA. But even if he does not take the project, still he has to bear these fees. CA तो ऐसा नहीं बोलेगा ना, अरे नहीं आप प्रोजेक्ट नहीं ले रहे हो तो मत दो फीस. Are you getting this? So this cost, whether you take up the project or you don't take up the project, can I say cost तो आपका डूब गया है. You have already incurred non-recoverable. Followed. So it is irrelevant for our decision making. Can you see, अगर आप प्रोजेक्ट लेते हो या नहीं लेते हो, this cost is already incurred. It is not adding any value. Followed. So it is irrelevant for our decision making. Means हमें अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट में कोई संक कॉस्ट है ना, तो उसको भी एक्सक्लूड करना है, उसको भी निकालना है. Followed. It has to be ignored. Correct? So in short, sunk cost is irrelevant for investment decision. We have to ignore that. ठीक है? Third is opportunity cost. Third is opportunity cost. Again, I will explain you with the help of some example. Let's say currently I have some barren land. Currently, this is the land that I have given to someone else for their जो भी business purpose and they are giving me rent. ठीक है, वो मुझे रेंट दे रहे हैं. I have some land which is of no use to me, so I thought why to not earn some passive income. So I gave it to some person जिसको required थी for some passive income and they are giving me rent. Now I decided to start a new manufacturing business of kids wear. ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहने से मुझे अब खुद की जगह चाहिए रहेगी.
I would need some land. Yes or no? So I decided, why not to use this land only? I myself have some land. I am the owner of this land. Why shall I not use my land and set up a factory and start the manufacturing business? So can I say when I start this business, अब मेरी ये रेंट इनकम स्टॉप हो जाएगी. I would lose this opportunity of rent income now, of earning this rent income now. Are you visualizing the example? Yes, correct. So this is an opportunity cost. Can I see a project लेने पे this income has stopped? Why? Because I'm taking this new project. So it is relevant for us. Are you getting this? So losing an opportunity to earn somewhere else is relevant for our decision making. Are you following this? So this losing of rental income is a cost to me in the form of opportunity cost. A accounting person will not include this. Accounting person को ऐसे opportunity cost से कोई लेना देना नहीं है. हाँ, उसके P&L में अब ये income नहीं आएगी. Nothing will be credited in his P&L. But as far as finance guy is concerned, उसको ये opportunity cost से भी लेना देना है कि यार because of taking this project, I am losing this income ना. So I should add this as a cost. I should add this lost opportunity as a cost in the project. Are you following? So in this cost, in this statement, I have to add opportunity cost. Are you following? Losing rental income. Everyone got this? So opportunity cost is relevant for our decision making purpose. Okay? So it is relevant. It has to be included. Fourth, allocated overheads. This is something that I feel you would have learned in costing. Let's say allocated overheads, yeah, you can call it as common cost. Let's say there are some admin expense. Let's say in my company, I have four departments. Department A, B, C, D. Okay? And there are some admin expense which are common for all the departments. Okay? Which are common for all the departments. Okay? So as a common cost, let's say there is some admin expense. This admin expense is common for all. ये admin expense मैंने सब department के लिए incur किया है. And let's say I'm allocating equally to all. So can I say department A? If I prepare departmental accounts, और if I prepare accounts department wise, तो कहने से डिपार्टमेंट ए में 25,000 जाएगा, बी में 25,000 जाएगा, सी में 25,000 जाएगा, डी में 25,000 जाएगा. Are you following this till now? Any doubts? Admin expense, a common admin expense I am incurring for 4 lakhs and I am allocating it equally to 4 departments. Followed? Now I am taking up a new project E. ठीक है? I am taking up a new project E. So can I say this is an investment decision for me? Starting or taking a new project or starting a new venture. Correct? But ये project लेने से this admin expense is not incurring, it's not increasing. ये 1 लाख का 1 लाख ही है. ये admin expense ये ज्यादा नहीं हो रहा है. अब वो ये admin में let's say there are 10 persons working under admin department. So ये project लेने से I'm not hiring some new person. These 10 person are only working for my department as well. So can I say there is no increase in admin cost, means there is no increase in common cost. सिर्फ allocation अब 20-20 हजार हो रहा है. Yeah, are you following this? By taking this new project, there is no increase in this admin cost. There is no increase in this common cost. Just allocation is now changing. तो बोलो क्या लग रहा है, relevant के irrelevant for my project? Not relevant. Pooja is correct. Not relevant. Are you getting this?
ओवरऑल तो 1 लाख का 1 लाख ही है, ओनली द एलोकेशन अमाउंट इज नाउ गेटिंग चेंज्ड। आर यू फॉलोइंग? सो ये प्रोजेक्ट ई लेने की वजह से ये कॉस्ट है ऐसा नहीं है, ये तो पहले से भी था। दिस 1 लाख वॉज ऑलरेडी देयर इन द पास्ट एज वेल, इट इज नॉट अ न्यू कॉस्ट। आर यू फॉलोइंग दिस? प्रोजेक्ट ई लेने पे ये 1 लाख इनकर कर रहा हूं ऐसा है क्या? नो, इट इज नॉट लाइक दिस, it was already there, now it is just an allocation amount that is changing। are you following? हाँ, प्रोजेक्ट ई लेने पे इफ आई से कि यार नहीं आपका 25,000 ये प्रोजेक्ट ई आपने लिया है नया प्रोजेक्ट, उसके वजह से वी हैव टू इनकर 25,000 मोर, देन दिस इज रेलेवेंट फॉर अस। आर यू फॉलोइंग दिस? Why? Because this cost has specifically increased. Why? Because of taking the new project. अगर ये प्रोजेक्ट ना भी होता, स्टिल आई हैव टू बेयर 1 लाख ओनली, वो तो पहले ही था। आर यू फॉलोइंग? हाँ, इफ द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, why? Because of taking the new project, then it is relevant for our decision making। Understood? So for common cost, the only point over here I want to discuss is for allocated overheads, for common cost, see whether the common cost is increasing or not. If it is increasing, then relevant. If increasing, then relevant for our decision making. Means that overheads we have to include in the cost. But if not increasing, not decreasing, not irrelevant. Are you following? It is irrelevant for us. Students understood this concept. This was all about relevant cost. कौन से कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट है, इट मीन्स कौन से कॉस्ट हमें स्टेटमेंट में इंक्लूड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। फॉलोड? क्लियर? with examples, if you understand with examples you get better clarity। ठीक है? moving ahead in life, yes, then only increased cost we will include in project E। why? because वो जो 25,000 बढ़ रहा है ना, वो project E के आने से specifically बढ़ रहा है, so include that। ठीक है? we will not include 1 lakh, only 25,000 we will include। मूविंग अहेड, हमने डिस्काउंटिंग रेट तो समझ लिया, हमने कैश इनफ्लोस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो समझ लिया। वन मोर स्मॉल कॉन्सेप्ट, नॉट कॉन्सेप्ट बट, अच्छा हमने ये भी सीख लिया हाउ टू डिस्काउंट द फ्यूचर वैल्यूज। यस और नो? कैलसी पे कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। ए स्टूडेंट्स टेल मी, ये जो 2 लाख डिवाइड बाय 1.1:1 है, या जो 3 लाख डिवाइड बाय 1.1:2 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 लाख into 1 divided by 1.1:1, and this 3 lakh, this can be written as 3 lakh into 1 upon 1.1:2। बोलो आंसर में कुछ चेंज होगा? Can I write this way as well, right? Yes, correct, I can write this way ना, it is nothing, it is just shifting 2 lakh, just breaking it down। ठीक है स्टूडेंट्स? क्या आप 1 डिवाइड बाय 1.1:1 की वैल्यू दे सकते हो मुझे कैलसी पे कैलकुलेट करके? एंड 1 डिवाइड बाय 1.1:2, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेक 1 डिवाइडेड बाय 1.1, प्रेस इक्वल टू 1 टाइम। दिस हाउ विल यू कैलकुलेट? टेक 1 ऑन कैलसी, डिवाइड बाय 1.1, प्रेस इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है? 0.909, 0.826, 0.909, 0.826। So can I say this is nothing but 2 lakh into 0.909? This is nothing but 3 lakh into 0.826? Yes or no? आपका आंसर 2 lakh into 0.909 will come this only, 181,818, 181,818,
and 3 lakh into 0.826 will come this only, 247,934. Likewise, you can do for 7 lakh as well, and likewise you can do for 6 lakh as well. ठीक है, करेक्ट. तो सर ऐसा ये करने का मेरा पर्पस क्या था? द पर्पस वाज वेरी सिंपल. ये जो 0.909 आया है ना, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्काउंटिंग फैक्टर of 10% for year one. This is how we write. Are you following this? This is called as discounting factor. Again, discounting factor. 10%. Can I say this is for year two? So can I say to find the present value, you simply multiply the cash inflows with respective discounting factors. ये भी फॉर्मूला बन गई. Are you following this? You simply multiply the cash inflows with the respective discounting factor of that year. Are you getting this? सर ऐसे भी कर सकते हैं, बट सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं. यू कैन फॉलो दिस एज वेल, बट कभी कभार है ना, क्वेश्चन में आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर डायरेक्टली दिया होगा. जैसे ईयर वन में डिस्काउंट नीचे टेबल दिया होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर का. ईयर वन का 0.909, ईयर टू का 0.826, ईयर थ्री का पॉइंट जो भी आए. ठीक है. सो कैन आई से आपको आंख बंद करके कैश इनफ्लोज इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कर देना है सीधा. आर यू आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Understood? So in that case, don't sit and calculate in calci. Just write the discounting factors. Just write the discounting factors. Multiply it with cash inflows and find the present value. ठीक है. हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया है, देन यू फॉलो दिस वे. कोई बात नहीं. अंडरस्टूड? ठीक है. So this is a small part I wanted to explain before starting with our first technique. Okay. So I created a background for you all. Now let's start our web series episode 1, payback period. क्योंकि ये सब के लिए कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू कैलकुलेट कैश इनफ्लोज, यू नीड टू लर्न दैट. हाउ टू डिस्काउंट दोस कैश इनफ्लोज, यू नीड टू लर्न दैट. अच्छा, डिस्काउंट करने के लिए यू नीड डिस्काउंटिंग रेट. हाउ टू फाइंड दैट, यू नीड टू लर्न दैट. अच्छा, कैश इनफ्लोस के लिए देयर आर सम रेलेवेंट कॉस्ट एंड देयर आर सम इनरेलेवेंट कॉस्ट. तो कौन से इंक्लूड करने कौन से नहीं करने वो भी आपको समझना जरूरी था. सो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन्ड यू. आई क्रिएटेड अ बैकग्राउंड फॉर यू ऑल. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टेक्निक, पेबैक पीरियड. Payback period is denoted by PBP, short terminology. Payback period. What does payback period means? It simply means time taken to recover my original investment, my initial investment. Means मैंने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 10 लाख इन्वेस्ट किया था इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, विद इन हाउ मेनी इयर्स आई एम रिकवरिंग दैट बैक. कितने साल में मैं वो रिकवर कर पा रहा हूँ, कितने टाइम में मैं वो रिकवर कर पा रहा हूँ. ए टाइम मीन्स नॉट 12 बजे 11 बजे 10 बजे. टाइम इज ईयर इन ईयर, इट इज इन ईयर्स. कितने साल में, नॉट दैट 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock. how how much years it will take to recover my original investment. This is payback period. ठीक है. अच्छा, ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, इलस्ट्रेशन लेता हूं. योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट
इज लेट से ₹10 lakhs, मतलब आपके जेब से 10 लाख जाएगा आज. योर कैश फ्लोज एवरी ईयर. लेट से लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 years, n इज इक्वल टू 5 years, ठीक है. योर कैश इनफ्लोज every year is 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh, 5 lakh. ठीक है. नाउ माई क्वेश्चन टू यू, कितने साल में, कितने साल बाद आई एम रिकवरिंग माई ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, और इन अदर वर्ड्स हाउ मेनी ईयर्स इज इट टेकिंग टू रिकवर दिस? एवरीवन? 2 years. Correct, correct. So can I say this 2 years that you calculated is nothing but my payback period, time taken to recover my original investment. Are you getting this? कितने साल में मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है. ये कहना है ये टू कैसे आया होगा? तो कहना है इसे आपने, आपके ब्रेन ने ये फॉर्मूला लगाई होगी. 10 लाख डिवाइड बाय 5 लाख. 10 लाख इज इनिशियल आउटफ्लो, yes or no? And can I say this is cash inflows per annum? So it comes to 2 years. So can I say बातों बातों में हमने एक फॉर्मूला बना दी पेबैक पीरियड की. It is nothing but initial outflows upon cash flows per annum. Any doubts, students, still here? Yeah, correct. Wait, Prakash. See, your brain only processed this and उसमें से एक फॉर्मूला डिराइव कर दी. Any doubts? आगे बढ़ू. This formula will only work under one condition. That condition is cash inflows per annum constant होना चाहिए. Every year cash inflows per annum same होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम करेगी. Let's take our initial, our original investment. 10 lakhs was our initial investment. Stream of cash inflows was something like this, 2376. तो कहना है से यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्या? 10 डिवाइड बाई 3 करेंगे क्या? 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे क्या? क्या करेंगे कि 10 डिवाइड बाई एवरेज? सर एवरेज कर दो. ए नो, दैट इज एब्सर्ड. Are you getting this? So this formula that I taught you right now works only when cash inflows per annum are constant. But what if they are not constant? How to find payback period? So let's learn that. ठीक है. Formula works only when cash inflows per annum are constant. ठीक है. अगर कांस्टेंट नहीं है तो डोंट डेयर टू यूज दिस फॉर्मूला. नेवर यूज दिस फॉर्मूला. डेयर भी मत करना, सोचना भी मत. So we will come to our next part, calculation of payback period when cash inflows per annum are not constant. ठीक है. Our original investment, our original example, sorry, not investment. Let's take that. So when I say our original example had initial investment of rupees 10 lakhs and stream of cash flows. Our N was 4 years, correct? Cash inflows was 2 lakh, 3 lakh, 7 lakh, 6 lakh, correct? Now payback period says कि आपका 10 लाख कितने टाइम में, कितने साल में रिकवर हो रहा है, ये जानना है. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या ईयर 1 में वो रिकवर हो रहा है? जस्ट से यस और नो. क्या ईयर 1 में एम आई एबल टू रिकवर कंप्लीटली इन ईयर 1? नो. ओके. क्या ईयर 2, ईयर 1 और ईयर 2 को मिला दे
तो क्या ईयर 2 के एंड तक हो पा रहा है रिकवर? नो, करेक्ट, ईयर 2 में भी नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या ईयर 3 के एंड तक हो पा रहा है रिकवर? क्या ईयर 3 के एंड तक हो पा रहा है रिकवर? यस सर, 10 लाख इज समवेयर ईयर। सो कैन आई से माई पे बैक पीरियड इज 2 प्लस समथिंग? यस और नो? सी क्लियरली 2 साल तक तो नहीं हो पा रहा है, इट इज समथिंग अबाउट 2। आर यू गेटिंग दिस? 2 प्लस समथिंग, yes or no? Correct. So now how to find this something? For that we have to prepare क्यूम्यूलेशन ऑफ कैश इनफ्लो का टेबल। क्या बनाना पड़ेगा? क्यूम्यूलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। ये तो फ्रीज हो गया कि पे बैक पीरियड इज 2 प्लस समथिंग, दैट इज फ्रीज, बट वी कैन नॉट राइट समथिंग इन आंसर इन सोल्यूशन, वी नीड सम वैल्यूज ओवर दैट। So how to find that something? We will prepare cumulation of cash inflow का टेबल। Can I say year 1 में 2 लाख क्यूम्यूलेशन, फॉर ईयर 2 इट विल बी 5 लाख? यस और नो? क्यूम्यूलेशन कैसे करते हैं? 2 + 3, 5। करेक्ट, मीन्स ईयर 2 के एंड तक आई एम एबल टू रिकवर 5 लाख। दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट। ईयर 3 के एंड तक 5 + 7, 12 लाख रिकवर हो गए। आर यू गेटिंग दिस? एंड ईयर 4 के एंड तक 18 लाख मेरे रिकवर हो गए। यस और नो? अंडरस्टूड क्यूम्यूलेशन का टेबल? And can I say my payback period lies my 10 lakh? I want to recover 10 lakh. Yes or no? Lies somewhere between here, 2 and 3. Correct? Yes or no? So now how to find this something, this value? So for that you prepare cumulation table. You locate the point of your initial outflow and now do interpolation. क्या करना है? Interpolation. See how I am doing. See, वेरी केयर, पे अटेंशन वेरी केयरफुली, एकदम ध्यान देना यहाँ पे। ईयर 2 टू ईयर 3, बिटवीन ईयर 2 टू ईयर 3, ठीक है, बिटवीन ईयर 2 टू ईयर 3, इन एंटायर 1 ईयर पीरियड, ईयर 2 और ईयर 3 के बीच पूरे साल में कहना है से मैंने 7 लाख कमाया। यस और नो? सी ना, 5 से 12 हो गया। करेक्ट, इन द एंटायर 1 ईयर पीरियड बिटवीन ईयर 2 एंड ईयर 3 I earned how much? 7 lakhs. Are you getting this? I earned 7 lakhs. 5 था ईयर 2 के एंड तक, वो 12 हो गया ईयर 3 के एंड तक। तो कैन आई से आई वांट 7 lakh? बट कैन आई से इट इज सफिशिएंट फॉर मी इफ आई जस्ट अर्न 5 lakh? Yes or no? To recover my original investment of 10 lakh, it is very much sufficient for me that I only earn 5 lakh. Yes or no? Are you following? So to recover 5 lakhs or to just earn 5 lakhs, how much time it will take? Can I say cross multiplication? 5 lakh into 1 divide by 7. Yes or no? Are you getting this? कितना आ रहा है? 0.71, ठीक है। So payback period is 2 plus 0.71, which is nothing but 2.71 years. Understanding, students? So when cash inflows per annum are not constant, then there are 2 steps to calculate payback period. Step number 1, prepare cumulation table. Prepare cumulation cash inflow का column. Second, locate your initial investment.
इन दैट क्यूमुलेशन कैश इनफ्लो का कॉलम. ठीक है. लोकेट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड फर्स्ट आइडेंटिफाई कौन से साल के बीच फॉल हो रहे हैं. सो इट इज फॉलिंग बिटवीन ईयर 2 and 3. ठीक है. सो कैन आई से 2 + समथिंग हो गया फिक्स. नाउ हाउ टू फाइंड दैट समथिंग. यूज दिस इंटरपोलेशन टेक्निक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टेक्निक इन सिंपल लैंग्वेज. आर यू फॉलोइंग. बिटवीन ईयर 2 and 3 पूरे साल में मैंने 7 लाख कमाया. कैन यू सी दिस. 5 से 12 हो गया. आई वांट 7 लाख. But it is very much sufficient for me if I just earn 5 lakh. Are you getting this? To reach at my initial investment, it is very much sufficient for me if I just earn 5 lakh. तो 5 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा. 7 लाख कमाने के लिए पूरा साल लगता है. तो 5 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा. तो इट विल टेक 0.71 years. Sir, why are we not considering PV of inflows? Good question. Again, किसका क्वेश्चन है ये. कैन आई से उसके लिए. सी दैट इज व्हाट इज द फ्लॉ ऑफ दिस टेक्निक. पेबैक पीरियड डज नॉट इंक्लूड और डज नॉट डिस्काउंट द कैश इनफ्लोस. आर यू फॉलोइंग. हमने एब्सोल्यूट नंबर लिया. ये देखो सारे एब्सोल्यूट फिगर्स लिए. क्यूबुलेशन भी सारे एब्सोल्यूट फिगर्स लिए. We are not discounting the cash inflows. So this is the drawback of this technique. And to resolve this drawback, can I say हमारे पास नंबर 2 टेक्निक है. ये कहा गया. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. आर यू गेटिंग दिस. सो मैं इस टेक्निक पे जाने ही वाला था. बट इट वॉज एपिसोड. वो एपिसोड आने में थोड़ा टाइम था. क्लाइमैक्स आने में थोड़ा टाइम था. So in discounted payback period technique, we will discount the cash inflows and then prepare the cumulation का column. Followed? But your question was good, huh? Understood how to calculate payback period? So simple याद रखना है. Payback period. First, check the stream of cash inflows. Whether it is constant, yes, simply apply the formula. If it is not constant, prepare cumulation of cash inflow का column. Locate the point of initial investment and from cumulation का column do interpolation. Followed? Everyone? ठीक है. So I'm just noting down the steps to calculate. Steps to calculate payback period. Step 1. Prepare column for cumulation of cash inflow. Step 2. Locate the point where your initial investment lies. This point is somewhere between year 2 and 3. Yes or no? This point I am talking about. Locating this point somewhere between year 2 and 3. Third, step 3. Do interpolation. Interpolation in simply it is nothing but cross multiplication. ठीक है. And find PVP. ये इंटरपोलेशन करने पे दिस इज नॉट माई पे बैक पीरियड. दिस इज 2 + समथिंग जो था ना. दिस इज दैट समथिंग. आर यू फॉलोइंग. दिस इज नॉट माई पे बैक पीरियड. मतलब 1 साल के अंदर आई एम नॉट एबल टू रिकवर. ऐसा भी सोचना लॉजिकली. ठीक है. सो इन शॉर्ट my original investment is getting recovered in the span of 2.71 years. Now my question to you, payback period lower the better, higher the better? Tell me, क्या लग रहा है.
Payback period, lower the better, higher the better? Lower. Obviously, I would want my initial investment to recover fast, quick. Are you getting this? So decision making criteria is, so payback period टेक्निक से हमें क्या सिखाया कि अगर सी फॉर द प्रोजेक्ट that that helps you in fast recovery of cash outflow. Are you following? Select that project that helps you in quick recovery of cash flows. Following? So lower payback period, better the project. Higher payback period. So here practically you can set a standard payback period. Let's say you are planning, you are contemplating in investing multiple projects, and you can क्रिएट अ स्टैंडर्ड कि जो प्रोजेक्ट 5 साल के अंदर, जो प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 5 साल के अंदर होगा, वी विल टेक दैट प्रोजेक्ट। अरे फॉलोइंग दिस, सो उसके लिए आपको पीबीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पीबीपी कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, एंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग कि 5 साल के अंदर पेबैक पीरियड आ रहा है कि नहीं। आर यू फॉलोइंग? अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड के कुछ एडवांटेजेस है एंड कुछ ड्रॉबैक्स है। एडवांटेज इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। दिस इज द मोस्ट, और आई वुड से टॉप मोस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। क्या करना है, कैश फ्लो सेम है तो जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द पे बैक पीरियड। कैश फ्लो सेम नहीं है, स्टिल इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, very simple and very practical as well. So it is very simple to calculate. But I would want you all to more focus on the drawbacks. ये टेक्निक की कुछ खामियां हैं। खामियां नंबर वन, as one of the student had rightly pointed out, we are ignoring time value of money concept. Are you following? We are ignoring time value of money का concept. Means we are not discounting the cash inflows. It means थर्ड ईयर के एंड में जो 7 लाख मिलने वाला है, इट इज वर्थ 7 लाख टूडे। दिस इज वॉट वी आर अज्यूमिंग ओवर ईयर, नॉट अज्यूमिंग बट दिस इज वॉट वी आर टेकिंग इट ओवर ईयर। 2 साल बाद जो 3 लाख मिलने वाला है, इट इज वर्थ 3 लाख ओनली टूडे ऑल्सो। आर यू फॉलोइंग दिस? सो वी आर इग्नोरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी ओवर ईयर. We are ignoring the discounting of cash inflows over here. This is one of the biggest drawback. Second drawback, very important again. This technique, let's say project is not of 4 years, but just assume के और कुछ साल प्रोजेक्ट चलता, 9 साल, and these are the stream of cash inflows. 5 lakh, just a random numbers I am taking, just randomly any figure I am taking. Can I say मेरा payback period तो यहां आके रुक गया? Yes or no? At this point I found the payback period and my job was done. So this technique ignores all these cash inflows. Payback period technique ignores all the cash inflows that are occurred after the payback period. मतलब यहाँ पे लेट से 50 लाख भी होता ना, स्टिल इट वुड गिव नो इंपॉर्टेंस टू दिस वैल्यू। यहाँ पे 400 lakhs भी होता ना, स्टिल इट वुड गिव नो इंपॉर्टेंस टू दिस वैल्यू। आर यू फॉलोइंग? सो अनदर ड्रॉबैक इज importance is not given to all the cash inflows. Importance is given only to those cash inflows up to the point of payback period. ठीक है? Are you following? So all cash inflows incurred after payback period are totally ignored. No importance are given to that.
इट मीन्स इट मीन्स कि वो कैश फ्लोज, ये सब कैश फ्लोज एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा मानता है पेबैक पीरियड. दिस इज व्हाट पेबैक पीरियड इज ट्राइंग टू से, कि मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं. आप 3 साल के बाद 500 करोड़ कमाओ, 10 लाख कमाओ, कुछ ना कमाओ, इट इज इररेलेवेंट फॉर मी. आर यू फॉलोइंग? Yes. So some projects may have higher payback period, but it may give some more cash inflows during the later life stage. Are you following? And most of the startups का ऐसा ही है. Startups initial stage पे, initial years में, they generate very less cash inflows. But during the later stage, they have a substantial, they grow very exponentially. Are you following? But payback period does not give that importance. Now, this drawback is resolved by our technique number 2, which is called as discounted payback period. Technique number 2 says कि hey, payback period, तू सब कैश इनफ्लोस एब्सोल्यूट टर्म्स में ले रहा है. यू आर नॉट डिस्काउंटिंग द फ्यूचर वैल्यूज. मीन्स फ्यूचर में 10 लाख मिलने वाला है, आज के तारीख में तो उसकी वैल्यू 10 लाख ही गिन रहा है, विच इज रॉन्ग. You should discount the cash inflows and then find payback period. Are you following this? So next technique is discounted payback period. तो आपको क्या लग रहा है? What would be the minor difference over here? The entire calculation process is same, huh? And यहाँ पे you will not be able to apply the formula. There is no formula. You have to follow that interpolation वाला process. आर यू गेटिंग दिस? रीजन, यहाँ पे कैश इनफ्लोज अगर हम डिस्काउंट करेंगे, लेट्स से कैश इनफ्लोज आर कांस्टेंट एवरी ईयर, इसको हम डिस्काउंट करेंगे, कहने से सबकी वैल्यूज चेंज होगी, बिकॉज द डिस्काउंटिंग फैक्टर वुड चेंज. डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ all these years would be different. So can I say present value, all this would be different amount. So can I say we cannot use that standard formula when we need to calculate discounted payback period. ठीक है, वो standard formula use नहीं कर सकते यहाँ पे. We have to follow that 3 steps. Understood? So again, continuing our previous illustration. Again, continuing with our previous illustration. Initial investment is, let's say, 10 lakhs. Now let's take life of 7 years for this example. So we are having cash inflows for the period of 7 years. ठीक है, 2 lakh, 5 lakh, 3 lakh, 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh and 8 lakh and 3 lakh. ठीक है, let's say the discounting rate WACC is 12%. Okay, calculate the payback period, discounted payback period. So यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? You have to prepare a table of cumulation cash inflows, but instead of cumulation cash inflows, now the column will be cumulation of present value of cash inflows. Are you getting this, everyone? Because here we have to, as the name suggests, we have to discount this cash inflows. Everyone understood? तो कहना है हम पहले ये कैश, ये फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट करेंगे बाय आर ओरिजिनल फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + r⁴n. ठीक है, एंड कैन यू ऑल हेल्प मी इन फाइंडिंग दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस? ईयर 1 का कैसे होगा? कहना है 2 लाख डिवाइड बाय 1.12 ⁻⁴ हो जाएगा. अब 1.1 नहीं है, रेट इज 12%.
ठीक है, तो 178,571. Now everyone knows how to solve this in Kelsey. For year 2, can I say it will be 5 lakh divided by 1.12 raised to 2. So take 5 lakh on Kelsey, press divide sign, 1.12, press equal to 2 times. Oh wow. Ved Prakash has found the discounting factors. Correct. So discounting factors करके भी आप कर सकते हो. ठीक है, सो ईयर 2 का कितना है, ये 398 आ रहा है कि 3213 आ रहा है. Why two different answers are coming? What three? 398,597. Okay. So this is 398,597. Okay. For likewise for year 3, for year 4, for year 5, 6, 7. Year 3 it is 213,534. Okay. 213,534. Hey, I am believing your answers. Huh? मैं calculate नहीं कर रहा हूँ. And I am not knowing these values as well. I'm believing your calculations. I have full trust on you. अरे year 3, year 4, 381, 310. Okay. 381, 310. Year 5, 283, 713. Okay. Year 6, 405, 304. 405, 304. Year 7, 305. Okay. So 305. 135,705. 135,705. ठीक है. So these are the stream of not cash inflows but present value of cash inflows. हमने discounting करा. Now let's prepare cumulation PVCI table. कहने से year 1 का तो as it is रहेगा. ठीक है. At the end of year 2, my cumulation PVCI would be 178,571. 178,571 plus 398,597. 577,168 plus 213,534. 790,702 plus 381,310. 11,72,012 plus 283,713. 14,55,725 plus 405,305. 18,61,030 plus 135,705. 19,96,735. Correct. This is the cumulation CI का column. Okay. सबका यही आ रहा. Now you start these 3 steps. अब आप start करो ये 3 step. Prepare column for, instead of cumulation CI, now for discounted payback period it will be cumulation PVCI. ठीक है. Step 1 done. Step 2, locate the point of original investment. Can I say मेरा original investment is getting recovered? My 10 lakh is getting recovered somewhere here. Yes or no? Between year 3 and 4. Are you getting this? Locate the point of original investment.
ईयर बिटवीन ईयर 3 and 4, एग्जैक्ट फोर्थ नहीं बोल सकते आप, बिटवीन ईयर 3 and 4. सो कैन आई से माई डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वुड बी 3 plus something. करेक्ट. ये फ्रीज हो गया. आई हैव लोकेटेड द पॉइंट. यस करेक्ट. नाउ स्टेप 3, डू इंटरपोलेशन. डू इंटरपोलेशन. ठीक है. बिटवीन ईयर 3 and 4, it means for entire 1 year I have earned how much? Can I say 790 702 से मैं 1172 012 पे आ गया. ईयर 3 के एंड पे आई हैड अर्नड 790 702. बट ईयर 4 के एंड पे आता हूं तो क्या देखता हूं? आई अर्नड क्यूमुलेटिवली 1172 012. यस और नो? करेक्ट. सो मैंने कितना कमाया पूरे साल में? कैन आई से आई वांट 381 310. और आई वुड से नॉट अर्न बट रिकवर्ड. रिकवर्ड 381 310. यस और नो? पूरे साल में. बट आई जस्ट वॉन्ट टू रीच टिल दिस पॉइंट, टिल 10 lakhs. मुझे 790 702 से 1172 पे नहीं पहुंचना है. मुझे 790 702 से 10 लाख पे ही पहुंचना है. हाउ मच आई हैव टू रिकवर? कैन आई से आई हैव टू रिकवर जस्ट 10 lakh minus 790 702. I just need to recover excess 209298. करेक्ट. पूरा रिकवर नहीं करना है. आई वॉन्ट टू जस्ट रीच एट अ पॉइंट ऑफ 10 lakh. So excess recovery needed is of rupees 209298. How much time it will take? So you can say cross multiplication. Divide by 381 310. कितना आ रहा है? 55.55 years. So can I say my discounted payback period will be 3.55 years. Followed everyone? So, understood how to calculate discounted payback period. The only one difference is you have to prepare additional table or additional column for present value of cash inflows. Why? Because we need to discount those cash inflows and then prepare cumulation ka table. Followed everyone? Clear? So two techniques done and dusted. This web series is of 3 days only. हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए वी हैव 3 सेशंस. 3 सेशंस में हमें पूरे 7 एपिसोड कंप्लीट करने हैं. एंड उसके सीक्वल मीन्स कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करने हैं. सो उसके सीक्वल के बारे में मुझे आपको समझाना है. अच्छा, वन क्वेश्चन टू यू ऑल. टेल मी, पेबैक पीरियड ज्यादा होगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड से, या discounted payback period would be higher than payback period? What do you think? Two episode is dull, not working. Discounted payback period would be higher. If someone said payback period would be higher. Can I say discounted payback period means we are bringing down this value, we are discounting this cash inflows की value. ये 2 लाख उसकी ओरिजिनल कैश इनफ्लो की वैल्यू है. उसकी वैल्यू अब हमने लाके खड़ा कर दी 178,571. तो कहना है इसे अब ज्यादा टाइम लगेगा फॉर रिकवरी? यस और नो? वी आर ब्रिंगिंग डाउन द वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोस. सो कहना है इसे नाउ इट विल टेक मोर टाइम टू रिकवर. So discounted payback period will always be higher than payback period. Huh? Following?
इट विल ऑलवेज बी हायर बिकॉज यहाँ पे हम कैश इनफ्लोज की वैल्यू कम करते जा रहे हैं. कैश इनफ्लोज की वैल्यू कम कर रहे हो मीन्स मोर टाइम टू रिकवर. यस और नो. Followed. So discounted payback period is always higher than payback period. अगर आपका उल्टा केस आ रहा है, देर इज नॉट रॉन्ग विथ क्वेश्चन, इट देर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू ऑल. ठीक है, आना नहीं चाहिए. लेट्स मूव टू, let's see if there are some practical problem on this. Okay, let's solve this example 4, which is on payback period. Huh? Suppose a project is costing 20 lakh and it yields annually a profit of 3 lakh after depreciation but before tax. Now my question to you, my very simple question to you. How much is my initial investment in this example? बताओ. Example 4 of module. 20 lakhs correct. ठीक है. How much is my cash inflows in this example? देखो और मुझे बताओ. सर 3 लाख है ना. Don't see the solution. सर 3 लाख है ना, 3 लाख पर एनम. कैन आई से दिस इज नॉट कैश इनफ्लोज, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स. यस और नो. अगर हम ये स्टेटमेंट, हमने जो इनकम स्टेटमेंट सीखा था ऊपर, कैन आई से इट इज नथिंग बट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, मींस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद बट टैक्स के पहले. यस और नो. दिस इज नथिंग बट एनपीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. Everyone followed this. This is not cash inflow. 3 lakh is not cash inflow. It is profit before tax. Correct? So 3 lakh mat le lena. We have to first calculate the cash inflows. How will we calculate? Profit before tax. 3 lakh. We will subtract the tax. How much is the tax rate given? Tax rate is 50%. So tax will be 1.5 lakh. So can I say my net profit after tax is 1.5 lakh? Again, this is not my cash inflows. This is the profit. I have to add back depreciation. I hope you remember that. Yes or no? And the balancing, the resultant figure would be my cash inflows. Following depreciation, they have asked, they have given the rate straight line method 12.5%. Yes or no? So can I say my depreciation amount would be 20 lakh is the project का cost, उसका 12.5%. कितना आ रहा है? 2,50,000. 2.5 lakh we will add back. My cash inflows comes to 4 lakhs. ठीक है. So can you see my cash inflow is not 3 lakh, it is neither 1 lakh 50 but it is 4 lakh. So can I say this is 4 lakh per annum now? Yes or no? See here they have written yields annual profit. So this cash flow is annual figure. So I can easily substitute the formula to find payback period. So therefore payback period is nothing but initial investment upon cash inflows per annum. So 20 lakh cash inflows per annum is 4 lakh. Can I say it will take 5 years to recover my original investment? Understood everyone? Any doubts, any concerns?
So this was when cash inflows per annum were constant, uniform. Next is non-uniform cash inflows. Means when cash inflows per annum are not constant. Can you try this? Can you try this within 5 minutes now? So that मुझे क्लैरिटी मिल जाए कि आपको समझ गया ये टेक्निक. Example 5. Please try. Initial outflow is 2 lakhs. Oh, they have directly given cash inflows, but they are not uniform. So just follow the 3 step and find payback period. You have to just find normal payback period. So 80, 140, 2 lakh, 220. Oh, I need to recover 2 lakh and it is getting recovered at the end of year 3 exactly. Yes or no? So my payback period is 3 years in this case. ठीक है, दिस वॉज वेरी सिंपल, डायरेक्टली वो इंटरपोलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. But what if, see now the next example is, what if the initial outflow is 2 lakh 5,000 instead of 2 lakh 20? तो ये आप सॉल्व करके बताओ ना. टेक दिस एज नॉट 2 lakh बट टेक दिस एज 2 lakh 5,000 initial outflow and try finding payback period now so that I can get a full clarity कि भाई आपको payback period तो समझ गया है. Can you try students without looking at the solution? Step 1 is done. Cumulation table. Step 2, locating the point of initial outlay. Can I say initial outlay 2 lakh 5? Somewhere between year 3 and 4. ठीक है. Step 3, interpolation. In the entire period, 1 year period time, पूरे एक साल में, I have recovered 20,000. But I just want to additionally recover 5,000 only. Are you getting this? मुझे तो 2 lakh 5 तक ही पहुंचना है, 220 तक नहीं पहुंचना है. So can I say payback period is equal to 3 plus, and what is that something? 5,000 into 1 divided by 20,000. 0.25. 3.25 years. Yes, 5 by 20. Correct? Everyone got this 3.25 years? Any students have any doubt? Any concerns? So these are advantages, easy to compute, a quick estimate of the time. Drawbacks, ignores time value, ignores cash flow that are generated after cash payback period. Yes or no? Now there is a small concept called payback reciprocal. Payback, this is not a technique, but just a small concept within payback period called payback reciprocal. क्या लग रहा है ये क्या होगा? By reading the term, by reading the terminology,
Can I say this is nothing but reversal of payback period? Yes or no? What was our payback period? It was nothing but initial outlay upon cash inflows per annum. तो कहना है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पे बैक रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा. रिवर्स ऑफ दिस कैश इनफ्लोज पर एनम डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट. एंड payback reciprocal is always calculated in percentage, so we will multiply this by 100. ठीक है. So continuing the above example, वरना इसका ही एग्जाम्पल होगा वो लेते. हाँ. Example 6. Can you see payback reciprocal annual cash inflow divided by initial investment? Project requires initial investment of 20,000 and it is likely to generate annual cash inflow of 4,000. The useful life of the project is 10 years. Calculate payback reciprocal. Can I say payback reciprocal in that case is 4,000 divided by 20,000 into 100. ठीक है. कितना परसेंट आया? 20%. करेक्ट. नाउ व्हाट डज दिस 20% से? इसका मतलब क्या? ये कहना क्या चाहता है? तो 20% से इट इज ट्राइंग टू से दिस 20% is approximately your IRR rate. ये हमारी जो सिक्स्थ टेक्निक है ना, सिक्स्थ टेक्निक IRR जो हम सीखेंगे आगे, वो ये कहना चाहती है कि दिस 20% इज एन क्विक एस्टिमेट ऑफ योर IRR रेट. IRR क्या होता है वो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे. बट पे बैक रेसिप्रोकल फॉर यू नाउ को क्या समझना है कि पे बैक रेसिप्रोकल गिव्स अ क्विक एस्टिमेट ऑफ IRR रेट. ठीक है. अभी फिलहाल एट दिस एपिसोड आप मान के चलो आपको IRR पता है. सो दिस पे बैक रेसिप्रोकल गिव्स अ क्विक एस्टिमेट ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. अंडरस्टूड. इंटरनल रेट इज नथिंग बट एक्चुअली, थोड़ा हिंट दे देता हूं, इट इज नथिंग बट द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट आपको 20% कमा के देगी एक्चुअल में. A small hint, detail IRR we will cover in our future sessions, further sessions. ठीक है. But payback reciprocal to hold true. Assumption number 1, we can use or we can calculate payback reciprocal only when cash inflows per annum are constant. अगर different है, अगर cash inflows per annum are not uniform, then you cannot use this technique to find IRR. Are you getting this? You follow a detailed technique of IRR जो हम आगे सीखेंगे. This is what this concept is trying to say. अगर cash inflows per annum is uniform, then calculate payback reciprocal. Payback reciprocal का जो फिगर आया, जो वैल्यू आई, it is nothing but your IRR rate estimation. ठीक है. This is what this concept is trying to say. Moving ahead, any doubts still here? Moving ahead with our third technique, ARR. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इन्होंने आगे लिया हुआ है. बहुत आगे है शायद. ठीक है, नो वरीज, आई एक्सप्लेन्ड यू दैट. कैन वी मूव टू थर्ड टेक्निक नाउ स्टूडेंट्स? हाँ, लेट्स मूव टू थर्ड टेक्निक, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न.
ARR. ये टेक्निक के नाम में ही है. यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न, बट फ्रॉम अकाउंटिंग, फ्रॉम बुक perspective, not from financial management perspective, but from taking accounting principles, keeping accounting principles in mind. Are you following, everyone? From accounting perspective, ये प्रोजेक्ट कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, दिस इज व्हाट ARR टेक्निक इज ऑल अबाउट. अंडरस्टूड? सो कैन आई से, if we have to calculate rate of return from accounting perspective, तो हम कैश इनफ्लोस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देंगे. आर यू गेटिंग दिस? हाउ डू वी कैलकुलेट रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न? कैन आई से इट इज नथिंग बट अकाउंटिंग प्रॉफिट, profit that you have earned from your investment. Are you getting this? आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया and every year you are earning accounting profit of 2 lakh. So can I say your accounting rate of return will be 20%? Are you getting this, students? So here, instead of cash inflows, हमें accounting profit लेना है. And can I say accounting profit is nothing but net profit after tax? Yes or no? So in ARR technique, no importance is given to cash inflows. Importance is given to net profit. Are you following? So can I say in other words, हमें ये जो लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर देते ना, दिस स्टेप ऑफ एडिंग बैक डेप्रिसिएशन, वो नहीं करना है टू कैलकुलेट ARR. फॉलोड बाकी सब सेम. You reach till NPAT, you take NPAT numerator, divide it by initial investment and get your ARR. Because here we want to find rate of return from book, from accounting perspective. Correct? So this is formula NPAT upon initial investment. This is formula number 1. Formula number 2, you take average of NPAT. Means every year NPAT would be different. For year 1, NPAT would be 2 lakhs. For year 2, 3 lakhs. For years 3, 6 lakhs. Different values. So you average it out and find the rate of return. Are you following? So this is formula number 2 to calculate ARR. Everyone understood? अच्छा, फॉर्मूला नंबर 3. फॉर्मूला नंबर 3 से आप न्यूमरेटर को एवरेज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी एवरेज करो. फिर डोंट डू ऐसा भेदभाव. फॉलोइंग? डोंट शो सम डिस्पैरिटी, डोंट शो सच डिस्पैरिटी. अगर न्यूमरेटर को भी आप एवरेज कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी एवरेज करो. एवरेज ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट. ए एवरेज मीन्स ओपनिंग वैल्यू plus closing value into 2. Initial investment का average means, I'm just writing that down as well. Average initial investment means opening. Opening means at the start of the project. Opening investment value at the start of the project plus closing investment value at the end of the project. End of the project में क्या हो सकता है investment value? Can I say that scrap value, something scrap that project keeps off, that is the closing investment value, divide by 2. ठीक है? So you are free to use any formula, but सब formula में आंसर चेंज आ जाएगा because variables में एक में हम एवरेज ले रहे, एक में नहीं ले रहे. अच्छा, एक में हम दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एवरेज ले रहे हैं. सो आंसर विल वेरी. डोंट वरी अबाउट दैट, बट यू आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द फॉर्मूलाज. जस्ट राइट द नोट. In fact, even institute has given these 3 formula to calculate ARR. This is version 1. Version 1, simple NPAT divided by original investment. ठीक है?
Version number two, average of profit divided by original investment. Original investment means investment in the beginning. Version three, average profit in the numerator, then average investment in the denominator as well. Everyone, are you following this? So yeah, you are free to use any formula. Just write a note about this. ठीक है? So can we take some practical illustration to find ARR? So come to illustration everyone, module में illustration number 2. Yes, वर्जन 2 में तो मैंने भी यहाँ पे वर्जन 2 में ओनली न्यूमरेटर में किया है ना, मेरे भी वर्जन 2 में. कैन यू सी ओनली एवरेज एनपीएटी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट. इनिशियल मीन्स इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट. That salvage value and it is nothing but this only. You just follow this. Answer same आएगा आपका. How much is the original investment in that illustration? Don't complicate much. Just follow simple steps. कहाँ गया? How much is the original investment? It is 3 lakhs. Salvage value is 90,000. So can I say this is closing investment value at the end? So 3 lakh is the opening investment value at the beginning. Closing investment is 90,000. Scrap. Divide by 2. कितना आ रहा है एवरेज इन्वेस्टमेंट? 1,95,000. Yes or no? कहना से इंस्टीट्यूट का एवरेज इन्वेस्टमेंट भी 1,95,000 भी आया है वर्जन सी में. कैन यू सी ओवर हियर? गॉट दिस? ठीक है. सो जस्ट फॉलो दिस और मत देखो. इट इज अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ. ठीक है. कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2 था ना, विच वॉज द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. कहने से ARR टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इट गिव्स अ क्विक एस्टिमेट कि हमारा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हाउ मच वी आर अर्निंग. ठीक है. A project is requiring an investment of 10 lakhs. So can I say my initial investment? My initial investment is rupees 10 lakhs. Correct? And it yields profit after tax and depreciation. Can I say this is NPAT? Yes or no? यहाँ पे लिख ही दिया है clearly. This is not cash flows. This is not cash inflows. Are you getting this? ये अगर मान लो ये कैश इनफ्लोज ऐसा लिखा होता तो कह रहे हैं उसमें से हम पहले डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं एंड देन वी वुड हैव फाउंड एनपीएटी एंड देन वी वुड हैव कैलकुलेटेड ARR. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स? ओके. सो ARR के लिए हमें कैश इनफ्लो पे ध्यान नहीं देना है. फॉर ARR व्हाट इज रेलेवेंट फॉर अस इज एनपीएटी. ठीक है. So can I say my payback period? Sorry, not payback period. ARR is nothing but average NPAT upon initial investment into 100. I have used version 2. You can use version 1 as well. Version 1 में क्या करना है? NPAT upon initial investment. तो कहना है आपको every year का ARR ढूंढना है. So if you use version 1, what is the formula for version 1? Can I say version 1 is simply NPAT upon initial investment.
तो यहाँ पे कौन सा एनपीएटी ले, ईयर 1 का ले, ईयर 2 का ले, ईयर 3 का ले, ईयर 4 का ले, कौन सा ले? यू हैव टू फाइंड सेपरेटली फॉर ईच ईयर। आर यू गेटिंग दिस? एंड लास्ट में फिर इसको एवरेज कर दो, ये जो एआरआर आएगा ना फॉर ईच ईयर, लेट्स से 10%, 15%, 20%, you average this. Are you getting this? But instead of doing that, I'm just using version 2 because it is more easier in this question. Understood? So average NPAT would be, can I say, ये सबका total 460 divided by 5. Yes or no? So 460 divided by 5 is my average NPAT. How much is my initial investment? 10 lakhs into 100. कितना आ रहा है ARR? By this, it is coming to 9.2%. See, can you see 9.2%? Second, you can use average on both the sides. Numerator में भी average लो, denominator में भी average लो. ARR is equal to average NPAT upon average investment into 100. Average NPAT 460 divided by 5. 92,000 था. Now, how to calculate average investment? Can I say my opening investment? Opening investment means investment at the starting of the year. Value is 10 lakh. At the end of the year, the value remains at 80,000. So can I say my average investment is 10 lakh plus 0.8 lakh divided by 2? Yes or no? So 92 divided by 540 into 100. कितना आ रहा है? 17.03%. Everyone got this 17.03%. 19.2, 17.074. Sorry, 17.04. Got this? So this was ARR technique. So can I say ARR is from accounting perspective? ये हम हमारे अकाउंट्स में कभी भी कैश इनफ्लोस ऐसा टर्म यूज करते हैं? नहीं करते हैं. अच्छा, जो प्रॉफिट आता है क्या उसको हम डिस्काउंट कभी भी करते हैं? From accounting perspective, from accounting principles and policies? No. So can I say this technique also ignores the discounting concept, or I would say also ignores the time value of money concept? Yes or no? So that's why this technique, payback period bolo, ARR bolo, it comes under non-discounting techniques. Are you following this? इसमें हमें डिस्काउंटिंग रेट से या प्रेजेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एब्सोल्यूट अमाउंट से मतलब है. सो दिस आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. या ओके, हम जाते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में. आई एम नॉट एबल टू फाइंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड. हाँ, ये रहा, मिल गया. ये लास्ट में है वो डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, लास्ट में है. Discounted payback period. For example, a 30,000 cash outflow is required for a project. Annual cash inflow of 6,000. So my payback period would be simply be 30,000 divided by 6,000. But the problem with the payback period is that it ignores time value of money. Yes or no?
And in order to resolve this, we have another technique called discounted payback period technique. ठीक है? तो आप है ना, ये example is homework for you all. Calculate discounted payback period when initial outflow is 10,000, 30,000, discounting rate is 15%, and cash inflows per annum are 6,000. ठीक है? अगेन डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड के लिए हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इवन दो कैश इनफ्लोस पर एनम आर कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज पीवीसीआई सबका अलग आ जाएगा. कैन यू सी दिस? ठीक है. सो डू एग्जाम्पल 4 एज होमवर्क एवरीवन. डन. आगे बढ़ू. फोर्थ टेक्निक नंबर 4, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में we will denote it as NPV. And even in our normal saying, I will now say NPV only. पूरा net present value नहीं बोलूंगा. Highly important, highly asked, highly practically used, highly logical technique. ठीक है? I already gave you some a brief insight about what is NPV technique. मैंने इस चैप्टर की शुरुआत NPV टेक्निक से करी थी. Can I say NPV technique to how to calculate NPV? Can I say it is nothing but present value of cash inflows less present value of cash outflow. Cash outflow is nothing but initial investment. Are you following? ये हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, स्टार्टिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर यहां से शुरुआत करी थी. Understood that in order to make decision, ideally you should not compare the outflow and inflow in absolute terms. You should compare in real terms. And what is real terms? It is comparison of present value of inflow with present value of outflow. ठीक है? Can I say अगर what is the decision making criteria for NPV technique? तो NPV टेक्निक ऐसा बोलता है कि if NPV is positive, you accept the project. Yes or no? Positive कब आएगा? जब present value of inflow would be more than present value of outflow. Yes or no? तब positive आएगा. So you accept the project. And if NPV is negative, you reject the project. ठीक है? This is a simple decision making criteria of NPV technique. कि अगर प्रोजेक्ट का NPV is positive, it means it would increase the shareholders' wealth, accept the project. If NPV is coming to negative, it means it will dilute the wealth of shareholders, reject the project. Any doubts, students, till here? No doubts. आगे बढ़े. Now my question to you. So as per NPV technique क्या कहना चाहते हैं पता है? Let's say there are multiple projects. Project A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z तक सबका NPV पॉजिटिव है. So this NPV technique will say accept all the projects. This is what NPV technique is trying to say. But can I say there will be some practical difficulties in accepting all the projects? Yes or no? मान लो सब project NPV is saying you should accept all the project, but number one constraint would be पैसा. सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सको उतने पैसे होने भी चाहिए. अगर उतने पैसे नहीं है तो इन दैट केस व्हाट शुड बी डन? सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग.
this concept will help you in selecting which project you should invest. Are you getting this? Even though all the projects has positive NPV, so NPV is simply saying accept all. बट मैं फिर एनपीवी को बोलता हूँ भाई एनपीवी ये सब में तो कितना पैसा लगेगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है. तो एनपीवी सेज गो टू कैपिटल रेशनिंग. ही विल हेल्प यू इन सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट बी लो, डी लो, एफ लो, कौन से लो. अंडरस्टूड? इट विल कम इन आगे का एपिसोड अगेन फॉलोइंग. बट आर यू ग्रास्पिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपके दिमाग में जा रहा है? So here I only wanted to explain that NPV technique will just say if NPV is positive accept, if it is negative reject. ठीक है? Now to calculate NPV, focus should be given on CI and CO. ठीक है? CI is cash inflow and CO is cash outflow. How to calculate cash inflows? I have already taught you that. कैश इनफ्लोस कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका स्टेटमेंट बनाना है. अच्छा, उसमें कौन से कॉस्ट रेलेवेंट है, कौन से इनरेलेवेंट है, उसकी बातें भी मैंने आपको बता दी. सो एक बार कैश इनफ्लोस आ जाए, फिर हमें उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. तो हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू? कैन आई से यू वुड नीड डिस्काउंटिंग रेट? Yes or no? And how to find discounting rate? That also I taught you. Yes or no? It is in this chapter, it is WACC, and this rate they will give you directly in the question. So एक बार cash inflows मिल गया, WACC मिल गया, can I say I can easily find present value of cash inflows? Yes or no? Likewise, you need to calculate present value of outflows as well. सर आपने तो बोला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट का तो प्रेजेंट वैल्यू सेम ही रहता है, उसको डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है. बट कैन आई से इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी कि इन्वेस्टमेंट आज ही लगेगा. कैन आई से इवन आफ्टर 2 years यू वुड नीड सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट? यस और नो? आफ्टर 5 years you would need some more additional investment. So in that case you need to discount those additional investment as well. Are you getting this, students? सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आउटफ्लो है तो उसको डिस्काउंट करना है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू डिस्काउंट द आउटफ्लो एज वेल. हाँ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यू डोंट नीड टू डिस्काउंट. व्हाई? बिकॉज इट इज गेटिंग इनकर्ड टुडे इटसेल्फ. बट कैन आई से इफ देयर इज सम एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड एट द एंड ऑफ 3rd year, so can I say we have to bring it to present value? Some additional investment you need at the end of 5th year, तो again इसका present value तो ढूंढना पड़ेगा. Are you getting this? So just like you do present value of cash inflows, and similar way you have to do present value of cash outflow. ठीक है? Now there are some special points that needs to be taken care of. Special adjustments, I would say, or special points that are needed to be taken care of while calculating PVCI, PVCO. Whenever you start a new business now, you need working capital as well. Are you getting this? Working capital is the funds that you need for day-to-day business running. ठीक है? This initial investment is investment required for fixed assets. But fixed assets को run करने के लिए, let's say मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसके लिए मशीन चाहिए, मशीन. तो मशीन का पैसा इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया उसमें. बट मशीन में रॉ मटेरियल्स डालना पड़ेगा, इन्वेंट्री लगेगा. यस और नो? सो इन्वेंट्री के लिए पैसा चाहिए. So that is working capital. Can I say working capital is considered as an outflow?
Are you following this? So working capital, it will be considered as an outflow at the start of the project. Correct? Understood till here? See, now I am explaining some special adjustments, special points, जो सब क्वेश्चन में नहीं आएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में आएंगे. आर यू फॉलोइंग? तो उसको कैसे हैंडल करना है, दैट आई एम टीचिंग यू. तो कहने से वर्किंग कैपिटल इज एन इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. Yes or no? But at the end of the project, release of working capital will happen. Release of working capital. It is considered as an inflow. Cash inflow में add करना है at the end of project. Sir, what is this release of working capital? Can I say, let's say life of the project is 5 years. ठीक है? अब 5 साल हो गए. 5 साल के एंड में मैं मेरा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने बैठता हूं. कहने से वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट सीए माइनस सीएल. मतलब इट इज नथिंग बट अमाउंट ब्लॉक्ड इन डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो कहने से जब प्रोजेक्ट की लाइफ एंड होगी, आई वुड रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम डेटर्स. यस और नो? जो पेंडिंग है आई वुड रिकवर दैट. जो पेंडिंग इन्वेंट्री बची है आई वुड बी सेलिंग ऑफ दैट. Yes or no? So working capital at the end of the project is considered as inflow and it is termed as release of working capital. At the end of the project, जितने भी डेटर्स है उससे सबसे पैसे मिल जाएंगे. जितने भी इन्वेंट्री कुछ बची है, it would be sold off. Are you getting this? So working capital at the start, you need funds for investment. It is an outflow. But at the end of the project, it is considered as an inflow. ठीक है? Followed? Everyone got this? Number 2. So this was how to deal with working capital. Number 2. Scrap. बोलो scrap value. At the पहले तो scrap कब जनरेट होगा? Can I say at the end of project ही होगा? Let's say you are planning to invest in new machine and the life of the machine is 10 years. So can I say at the end of 10 years you will receive some scrap value? Yes or no? So बोलो ये inflow होगा outflow होगा? Yeah, so working capital if it is in between, then again it will be an outflow. So additional investment in working capital in between, मतलब start और बीच. So project starts at zeroth year, ends at 5th year. So let's say working capital additional is required at the end of year 2. So it will be an outflow at end of year 2. ठीक है? जब जब चाहिए तब तब आउटफ्लो होगा. बट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट सब वर्किंग कैपिटल एक साथ रिलीज हो जाएगा. आर यू फॉलोइंग दिस? सो ओरिजिनल वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल all will be released at the end of the project and it will be treated as an inflow. ठीक है? Likewise scrap, बोलो inflow होगा outflow होगा? Can I say you will earn the scrap value? You will generate cash by selling the scrap, so it will be an inflow. Correct? See, सिर्फ inflow या outflow इतना जानना जरूरी नहीं है. You also need to learn when it will be inflow and when it will be outflow. Are you getting this? Because we need to discount, na? Are you getting this? So the point of inflow and outflow is equally important. Not just कि ये inflow है कि outflow है. Followed everyone? Point of generation of inflow outflow is equally important. Why? Because we need to discount that. Understood? So this was, there are some couple of special adjustment as well regarding capital gains. But since the time is up, we will discuss in our next session. ठीक है? So आज के series का episode we are ending over here. I hope this episode
added some value in life. The normal web series that you see on Netflix, Hotstar, it it is a waste of time. But this has created some value in your life. Yes, working capital in between we have to discount that ना because वो at the beginning नहीं हो रहा है बीच में हो रहा है so we need to discount that as well. Study perspective में it is Oscar level. So Mustafa, you can give me Oscar award. Yeah, thank you all. Thank you. Have a nice day. Thank you everyone. Tech team, I'm ending the meet. Huh? Yeah, thank you.